Hi, welcome back. I hope you guys are very clear about perfect substitute because in this video I'm going to start perfect complements, which is the next utility function. ठीक है, so perfect substitutes का हमने फॉर्म पढ़ा था, अब हम perfect complements का फॉर्म पढ़ते हैं. The general form of perfect complements is u is equal to minimum of ax1 comma bx2. Again, let's look at the talking points. 1, it's a minimum function. 2, this is a linear and this is also a linear. So it's a general form of a minimum of linear comma a linear. If I was to ask you, अगर मैं आपसे पूछूं कि linear कैसे हम देखते हैं, then what would be your answer? I reiterated it a lot in the last video. Yeah, you would say that x1 has to carry a power of 1 and x2 also has to carry a power of 1. Anytime अगर x1 और x2 की जो पावर है वो 1 से 1 ना होके कुछ और है, कुछ भी और है, then it's not a linear comma linear form. Then the form becomes different. That form also we will discuss, but वो हम discuss करेंगे अपनी kinked ICs के वीडियो में, जो कि आपने इंडेक्स में देखी होगी. लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम perfect complements की बात कर रहे हैं. Perfect complements के अंदर you have to see 3 things. First, it has to be a minimum function. Second, it has to be a minimum of a linear comma a linear. Third, जो आपकी a और b की वैल्यूज हैं, they have to lie between 0 and infinity. इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं हो सकती. a and b cannot be less than 1, can't be less than 1. ठीक है, तो ये 3 आपके पॉइंट्स हैं ही हैं. You know, in perfect complements, there is one more thing which is very, very different and you have to understand is कि perfect complements के अंदर ना MRS exist नहीं करता है. Perfect complements के अंदर there is no marginal rate of substitution. Before I get into the diagram and explain you how, मैं आपको layman term में बताती हूँ. Substitution क्या होता है? Substitution होता है जब आप एक गुड को दूसरे गुड से substitute करते हो. Suppose मैंने आपसे बात करी let's say आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स की. आपके पास 2 गुड्स हैं, आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट्स. Let's suppose I'm giving you lots of ice creams and no chocolates and you like both. My premise is कि आपको दोनों अच्छे लगते हैं लेकिन आपके पास बहुत सारी आइसक्रीम्स और आपके पास कोई चॉकलेट नहीं है. So होगा क्या है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि अच्छा give me a few ice creams for the chocolates that I can give you, you will be willing to substitute क्योंकि आपको दोनों गुड्स अच्छे लगते हैं. आप किस रेट पे सब्सटीट्यूट करते हो वो हम डिफाइन करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन से. I'll repeat myself. जब आपके पास 2 गुड्स हैं और आपको दोनों गुड्स अच्छे लगते हैं तो आप किसी ना किसी रेट पे सब्सटीट्यूट करने को तैयार हो. किसी ना किसी रेट पे आप आइसक्रीम्स को गिव अप करके चॉकलेट्स लेने को यू विल बी रेडी, राइट? जिस रेट पे आप उसको सब्सटीट्यूट करते हो उस रेट को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बोलते हैं. नाउ व्हेन यू कम टू परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में हमारे पास गुड्स कैसे होते हैं? लेट्स से लेफ्ट शू प्लस राइट शू. या फिर अगर आपको लास्ट चैप्टर का एग्जाम्पल याद हो मेरा, आई हैड टेकन टी प्लस sugar. For me a cup of tea is whole if I put sugar in it. Or I had taken an example of probably a bread and butter. Now let's suppose आपके पास 10 लेफ्ट शू हैं और आपके पास 0 राइट शू है. आपके पास 10 लेफ्ट शू हैं और आपके पास 0 राइट शू है. Are you willing to trade off? Are you willing to say कि हाँ यार ठीक है मैं अपने राइट शू गिव अप करके लेफ्ट शू ले लूंगा? लेफ्ट शू तो क्या आपके पास है ही नहीं. बट what I'm trying to say is कि this 10,0 combination does not make sense to you. Why does not make sense to you? क्योंकि लेफ्ट शू without a right shoe has no meaning. तो जब तक आपके पास कोई ये कॉम्बिनेशन नहीं आता, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ इफ यू गिव मी 5 लेफ्ट शू आई कैन गिव यू 5 राइट शू, विल बी वेरी हैप्पी. Then you will do that trade-off and come to 5,5. लेकिन उसके बाद मैं आपको ट्रेड ऑफ करने को बोलूँ कि आप मुझे लेफ्ट शू दे दो मैं आपको राइट शू दे दूंगी, आप ट्रेड ऑफ करोगे? नहीं करोगे. आप सब्सटीट्यूट करोगे? नहीं करोगे. तो पॉइंट इज कि जब आप एक
एक वैल्यू पे आ जाते हो, आप उसके बाद उसके बियॉन्ड सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहते हो। क्योंकि आप सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहते हो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। लेट अस लुक एट इट फ्रॉम एन एग्जाम्पल फ्रॉम अ डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू वन मोर टाइम. So let's try and draw the diagram and understand it further. So let's suppose हमारे पास है u is equal to minimum of 5x1, x2. You see, अगर आपने देखा हो, मैं डेलिबरेटली एग्जाम्पल्स वो नहीं ले रही हूँ जहाँ पे a जो है वो b के इक्वल है, ना यहाँ पे मैंने लिया, ना ही मैंने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की वीडियो में लिया था, क्योंकि a इक्वल टू b इज ओनली वन ऑफ द केस. बट एक्चुअली आपके पास a नॉट बीइंग इक्वल टू b भी हो सकता है. a and b आर टू सेपरेट वैल्यूज. हमने मिनिमम फंक्शन ऐसे नहीं डिफाइन किया दैट इट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ax1, ax2. सो इट्स नॉट दैट कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट तभी होगा जब यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट, जहाँ पे जो लेटर है, जहाँ पे जो नंबर है वो इस नंबर के इक्वल है. That is only one of the cases. So minimum of x1, x2 is only one of the cases. लेकिन a और b की कोई और भी वैल्यू हो सकती है. बस ये है कि हमारा जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है फिर वो उस प्रोपोर्शन में हो जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास फंक्शन गिवन है u is equal to minimum of 5x1, x2. So let's take a bundle. Let's say x1 is 0 and x2 is 5. Then I get a utility of minimum of 5 into 0, 5 into 0, 5. इसका minimum is 0 only. Minimum of 5 into 0, 5 is 0, क्योंकि 5 into 0 is 0, है ना. So पहली चीज तो ये है कि अगर x1 या x2 में से कोई एक भी 0 है तो मेरी यूटिलिटी क्या होगी? 0. If either x1 or x2 is equal to 0, then my utility is 0. So if x2 is 0, then x1 can be anything, will be this line. जब x1 0 है and x2 is anything, then we have this line. So my first IC actually is this axis and this axis, and this IC carries a utility of 0. I'll repeat myself. अगर आपका x2 0 है तो x1 can be 1, 2, 3, 4, 5, anything, but that line will be overlapping here. That line will be overlapping the x-axis here. Similarly, जब x1 0 है तो x2 कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, वो वाली लाइन यहाँ पे ओवरलैप करेगी. सो इस लाइन और इस लाइन को जब हम वो बना लेते हैं तो हमारे पास एक IC आता है जिसकी यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज 0. ठीक है, let's take the next bundle. Let's say I'm taking now the bundle of 1, 5. So my utility becomes minimum of 5 into 1 is 5, 5. So I get a kink at 1, 5. This is 1, this is 1, 2, 3, 4, 5. This is 5. ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट आ गया जहाँ पे मेरी सेटिस्फैक्शन है 5. 5 into 1 is 5, 5. Minimum of 5, 5 is 5, so utility is 5. So for a utility of 5, what other bundles are there? 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5. So now let's look at the other arm. Other arm pe I can have any value like 1, 6, 1, 7, and so on and so forth. So 1, 6, matlab I'm at 1. 1, 6 will be 5 into 1 is 5, 6, the minimum is still 5, and so on and so forth. आप वो values निकालते जाओगे, आपके पास ये कर्व आएगा. So this is my vertical line, kink, horizontal line. So now let's talk about trade-off. ये मेरा एक IC है. अगर आप किसी एक इस पॉइंट पे हो, let me call this point A. आप A पे हो, आप B पे हो, आप indifferent हो, तो आप बोलोगे लिसन मेरे पास तो ना 5 यूनिट्स है गुड 2 के और 1 यूनिट है गुड 1 का, मेरा कॉम्बिनेशन जो है मैं परफेक्ट हूँ क्योंकि मुझे उसी रेशियो में कंजम्पशन चाहिए, मुझे उसी रेशियो में कंजम्पशन चाहिए. आई वांट टू कंज्यूम इन द रेशियो ऑफ 1:5 फॉरएवर. ये यूटिलिटी फंक्शन मुझे क्या बता रहा है? दैट आई वांट टू कंज्यूम इन द रेशियो ऑफ 1:5 फॉरएवर. ये रेशियो मेरे पास कैसे आई? 1:5. सो मैंने बोला मुझे तो हमेशा हमेशा किस रेशियो में कंज्यूम करना है? 1:5 की रेशियो में मुझे कंज्यूम करना है, बिकॉज दैट इज माई परफेक्ट रेशियो, दैट इज माई आइडियल रेशियो.
मैंने आपको बोला कि ठीक है मैं आपको 1 यूनिट दे रही हूँ गुड 1 का, बट गुड 2 के ना 5 की जगह 7 दे रही हूँ। आप बोलोगे ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ मुझे 2 वापस कर दो, आप बोलोगे ठीक है। आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है जब आपके पास 1:5 का रेशो है, उसके अंदर 1 यूनिट के साथ अगर आपके पास 5 है या 7 है या 10 है, आपकी यूटिलिटी तो 5 से ही है। बाकी जो एक्सेस है वो आपके लिए यूटिलाइज होगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास उतना गुड 1 नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए, उतना गुड 1 नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। दूसरे तरीके से देखो, मैंने आपको बोला आपकी रेशियो 1:5 है, लेट मी गिव यू 5 यूनिट्स ऑफ गुड 1 एंड 5 यूनिट्स ऑफ गुड 2, व्हाट विल यू से? ओके, बट इफ आई टेल यू गिव मी 4 यूनिट्स बैक, देन ऑल्सो यू डोंट माइंड, बिकॉज जब आप 1:5 की रेशियो में हो तो आपके पास 1 यूनिट ऑफ गुड 1 का तो यूज है 5 यूनिट्स ऑफ गुड 2 के साथ, लेकिन जब मैंने 5 यूनिट्स ऑफ गुड 2 फिक्स कर दिए तो 1 यूनिट ऑफ गुड 1 के अलावा आपके पास और उसका you don't have scope of more, you don't have utility for more, तो आपके पास अब 1 of good 1 के जगह 2 हो, 3 हो, 4 हो, आपको फर्क नहीं पड़ता है। सो ये तो मेरा एक आईसी हो गया। उसके बाद सेकंड आईसी विल बी further on above it. Let me just show you, give me 1 second. So where would my second IC be? My second IC will be at 2, 10, like somewhere here. My third IC will be at 3, 15, and so on and so forth. So these are my ICs and they are perfect substitutes. I'm consuming the ratio of 1:5. Okay, so let's just recap हमारे perfect complements. Perfect complements के अंदर हमने क्या क्या चीजें बोली हैं? Perfect complements का general form होता है U is equal to minimum of linear comma linear, which is ax1 comma bx2, ax1 comma bx2, ठीक है। सेकंड, MRS एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जब आप किंक पे आ जाते हो उसके बियॉन्ड आप ट्रेड ऑफ करना नहीं चाहते हो। किंक पे आने के लिए आप इनफाइनाइट ट्रेड ऑफ करके किंक पे आना चाहोगे, ठीक है। वंस यू द किंग यू डोंट वांट टू हैव अ ट्रेड ऑफ, till the time you reach the king you are willing to have an umpteen amount of trade off, आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। सो इसका MRS एग्जिस्ट नहीं करता है। हमारी रेशियो क्या होती है जिसमें हम कंज्यूम करते हैं? B:A, you see here, B:A, the ratio in which we always consume is B:A. When you plot the ICs are always L shaped. The ICs are always L shaped. So these are the things about perfect complements that we do need to remember. ठीक है, x1 से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलती है? A, और x2 से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलती है? B, right? Okay, so let me give you a question now and let's understand it. If I tell you a person wants to consume 2 units of butter with a unit of bread, always, what would be his utility function? What is the utility function? आप क्या करोगे? आप बोलोगे let butter be x1, let bread be x2. आप किस रेशियो में कंज्यूम कर रहे हो? You are consuming it in the ratio of 2 butter with 1 bread, 2 butter with 1 bread. अब let's suppose 1 unit of butter मुझे satisfaction देता है, let's say 1 util का, ठीक है। तो 2 यूनिट्स ऑफ बटर मुझे क्या सेटिस्फैक्शन देगा? 2 यूटिल का। बट इस 2 यूटिल का सेटिस्फैक्शन पाने के लिए मुझे कंबाइन करना पड़ेगा इसको 1 ब्रेड के साथ। सो 1 ब्रेड ऑल्सो टेक्निकली गिव्स मी 2 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड 2 बटर्स ऑल्सो गिव मी 2 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो जब मैं U इज इक्वल टू मिनिमम बनाऊंगी तो मैंने लिखा x1 A कॉमा B x2। अब मुझे फिगर आउट करना है A क्या है और B क्या है, ठीक है। हमें पता है MUX1 is A and MUX2 is B. So what is the utility that 1 unit of butter give me? 1 util of satisfaction. So I have
A to be equal to 1. What is the satisfaction? Then 1 unit of bread give me B, which is 2. So B is 2, 2x2. So this becomes my utility function. This becomes my utility function. आपको क्रॉस चेक करना है आपका फंक्शन ठीक है बनाया आपने कि नहीं बनाया. Let's do that. So I said u is equal to minimum of x1, 2x2. ये मैंने यूटिलिटी फंक्शन बनाया, राइट? अब इसका किंक निकालते हैं. किंक क्या होगा? 2:1 पे आप निकाल सकते हो. टेक अ हाइपोथेटिकल बंडल 2, 1. आपकी यूटिलिटी कितनी आई उससे? 2, right? So for a utility of 2, you're having 2 here and 1 here. So this is my kink. I have butter on the x-axis. X1 is butter and bread on the y-axis. So I have butter here and bread here. In a perfect complement, we always consume at the kink. So at the kink, I will consume 2 units of butter with 1 unit of bread. Is that true? Is that what he wanted to consume? Yes. 2 units of butter with 1 unit of bread. You understand मैंने कैसे निकाला? मैंने बोला मुझे चाहिए 2 बटर विद 1 ब्रेड. मैंने हाइपोथेटिकली अज्यूम किया कि 1 बटर अगर मुझे 1 यूटिल देता है तो 2 बटर मुझे 2 यूटिल देगा. अब 2 बटर जो है वो कंज्यूम होगा 1 ब्रेड के साथ, तभी मेरे पास 2 यूटिल आएंगी. तो मेरे पास क्या हुआ? मैंने बोला कि मेरे पास जो फंक्शन आता है वो आता है ax1, bx2. a जो है वो mux1 होता है. 1 unit of butter gives me 1 util of satisfaction. So A is 1. 1 unit of bread gives me 2 utils of satisfaction. So B is 2. That is how my utility function got made. Let's take one example. A person combines 2 units of ketchup on 3 hot dogs. What is his utility function? ठीक है. Again, ketchup is let's say x1 and hot dog is let's say x2. हाँ, अब मैंने बोला कि मेरे पास जो यूटिलिटी फंक्शन है that will be the form of minimum of x1, bx2. A और B निकालना. 1 unit of ketchup, let's say, gives me 1 util of satisfaction. So 2 units of ketchup will give me 2 util of satisfaction. Now 2 util of satisfaction मुझे तब मिलेगा जब मैं 2 units of ketchup के साथ क्या combine करूँ? 3 hot dogs. So 3 hot dogs give me 2 util of satisfaction. So then one hot dog will give me 2/3 util of satisfaction. So my utility function becomes u is equal to minimum of ax1. A क्या है? A is the amount of utility I get from 1 unit of ketchup, which is 1. So A is 1 and B is 2/3x2. So this becomes my utility function. I can do a monotonic transformation. Remember monotonic transformation? है ना? I can do a monotonic transformation, multiply the whole thing by 3. Then I get u to be equal to minimum of 3x1, 2x2. 3x1, 2x2. Let's make the IC for this one. U is equal to minimum of 3x1, 2x2. है ना? Let's say कि I take a unit of 2, 3. 2, 3 में मुझे utility मिली 6 की. So for a utility of 6, I am saying that I'm going to have 2 and 3 picking. So this becomes my IC. This point being 2, 3. This point right here being 2, 3. When this point right here is 2, 3, that means my consumption ratio is 2:3, which is what we said right here as well. 2 units of ketchup with 3 hot dogs. So you understand? So what I've done with you is I have told you how to go from a utility function to an IC. I've also told you how to go from a statement to a utility function. I've also told you what is MUX1, MUX2 and why there is no MRS in perfect complements. So this finishes our perfect complements. I'm going to do a video later in this chapter which is called kinked ICs. Kinked ICs is a very, very important video. It will give you a further understanding of perfect complements. All right. Thank you.